Hello. Um, Let other people join. Let's wait for 2 3 more minutes and then we will start with rule of law and separation of powers, right? Today's topic is going to be rule of law and separation of powers. Hello, Ashwini. Good evening. How are you? ऑल्सो इट इज़ एडवाइज्ड आज आप लोग अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठे एंड कीप मेकिंग शॉर्ट नोट्स और वट एवर आई एम टेलिंग यू राइट. हेलो अस्मिता, हाउ आर यू टुडे? गुड इवनिंग. हैव यू रेड द टॉपिक्स जो अभी तक हमने किए? दो टॉपिक्स, रूल ऑफ लॉ और सॉरी मेजर लीगल सिस्टम्स एंड इंडियन लीगल सिस्टम. Yes, good, Asmita. Okay, so today we are going to start with Dicey's concept of law, and we will connect the dots from Dicey's concept to the Indian legal system, how Dicey's concept is applicable in Indian law, right? And we will also try to frame the answer on the applicability of rule of law in India. Hi, Manu, POXO Act. All right. You are in which year, Manu? Okay, actually, I have my own academic commitments piled up for next few months, so I'll try to do so for you. POXO Act. Okay, I am also in third year. You must be asking it for judicial services, right? Preparing for RJS. All right, sure. I'll try to do so. I'm also preparing for judicial services, and I'll also try to do so. All right. So I think let's start with Dicey's concept. ठीक है? Rule of law, as we discussed previously, we have discussed that rule of law means that the land, that the rule of land is law. Law is superior, and law is the supreme command in a nation. That means rule of law, right? सो जो रूल ऑफ लॉ था वो उसका ओरिजिन क्या है? रूल ऑफ लॉ एक मैक्सिम से डिराइव हुआ था और उस मैक्सिम का नाम है ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट. Sure, Manu. I'll try to do that act as well. All right. So we were on the maxim. It is a French phrase. Basically, rule of law is derived from a French phrase which is la principle de legalite. La principle, principle, de legalite. Legal ite legalite. It is a French phrase which means that the governing body is based on principles of law and not of people, not of men. So it simply means that all the state affairs should be done in accordance with the law. This was a concept which opposes tyranny and arbitrary powers given in the hand of rulers of a nation.
Okay, so this is what rule of law means. Whenever you are going to write an answer on rule of law, you are going to start it with this paragraph only, that rule of law is a phrase which has been defined from French origin by a phrase known as la principale de legalite, meaning that government should be based on principles of law and not on the principles of men or ruler of that country. Because the whole purpose of rule of law is to oppose the tyranny and arbitrary powers of the governing authorities. So, who is the originator of this principle? Sir Edward Coke. Sir Edward Coke, 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 he was the Chief Justice, and he originated this principle to expel out the arbitrary powers and unlawful authorities of kingship. There used to be kingship earlier, there used to be tyranny. So in order to evade that tyranny from the nation, Sir Edward Coke formulated this principle of rule of law. Okay, he succeeded to accomplish the supremacy of law, and therefore he accomplished this rule of law in his nation, and then he hence therefore he proved that the king is always going to be under law and also under god, because it previously law was also linked to morality as well, right? So are we clear till here the origin, on what maxim we have derived rule of law and who was the originator? Are we clear on the history of rule of law? Any questions till now? I'm seeing there are very less people today. Asmita, you have any question? All right. So rule of law फ्रेंच मैगजिम से डिराइव हुआ है एंड सर एडवर्ड कोक इसके ओरिजिनेटर थे. बट देन देयर द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई डू वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइसी व्हेन एडवर्ड कोक वाज इट्स ओरिजिनेटर. डाइसीज जो थे, ही वाज अ जूरिस्ट, एंड डाइसी ने अपनी बुक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ की बात की है, एंड उसको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कंसाइज किया है दैट रूल ऑफ लॉ इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. अब रूल ऑफ लॉ में हर नेशन के अपने लॉज हैं, हर कंट्री के, हर कम्युनिटी के अपने लॉज हैं, तो क्या वो सब सुप्रीम माने जाएंगे? कैसे हम एक लॉ को एप्लीकेबल कैसे करेंगे? तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है, एक प्रॉपर bifurcation, या we can say a proper branching of rule of law has been given by Dicey's concept. So Dicey has divided rule of law in three concepts. The very first being supremacy of law, second being equality before law, and third being predominance of legal spirit. So whenever you are going to talk about Dicey's concept, you're going to make a flow chart. In the middle square, you are going to write Dicey's concept of rule of law, and then you will branch it like three branches. You will make from it. First one is going to be supremacy of law. Second one is going to be equality before law, and third one is going to be predominance of legal spirits. Right. So supremacy of law means that in opposed to the arbitrary power, कि किसी भी लीडर, किसी भी किंग की मनमर्जी, टायरनी नहीं चलेगी, जो लॉ है वही सुप्रीम है. ठीक है, तो देयर विल बी it does not includes the tyrannical powers and the discretionary powers that the king used to exercise earlier. And then it says that whenever अगर कोई वो भी है, डिस्क्रेशनरी पावर भी है, तो उसको भी लोगों के हित में लॉफुली जो है उसे अपनाया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस इस तरह की जाएगी दैट इट शुड नॉट अपोज द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. It suggests that government cannot simply act in a way which pleases it. Government has to make rules according to the law and according to the desire of people, of what people want from their government. However, supremacy of law में arbitration का exclusion है. ठीक है, it includes arbitrariness of the
courts of the government, right? So it does not include the arbitrary power of the government. This means supremacy of law. And then we move on to the second principle, equality before law. Now, how these two principles are different from each other? The first principle, supremacy of law, tells us that law is supreme, like law stands here, and all the people, government, the people, the countrymen, the soldiers, the president, everyone is below law, and everyone abides by the law. Second principle is equality before law. Equality is that law is going to treat everyone equal. The first principle means that law is supreme, law is the supreme command of a nation. Second principle means that that supreme command, that is law, it treats everybody equal. Everyone is equal before the law. So Dicey says no matter how high you are, what is your post, whether you are a district magistrate, whether you are a collector, whether you are a judicial magistrate, whether you are the most senior most advocate of the nation, law is always going to be above you, and law is always going to treat every citizen of the country equally. Whether that citizen is a tea maker, whether that citizen is a shopkeeper, whether that citizen is a professor, a doctor, a lawyer, an engineer, he is equal in the eye of law. So, there the law is equally subjected to all the classes of ordinary people. And इसका एक maxim है, droit administrative. It means that people should not be discriminated, and law should apply equally to everyone. The maxim is that is a French maxim also, droit administrative. DROIT, droit administrative. That means that there is no negation of equality, and people should be treated equally, and law should apply equally to all the citizens of a country and also to the officials. Are we clear till these two things? Equality before law and supremacy of law. Do we have any doubts here? Asmita, Ashwini, are we having any doubts here? All right. Then the third principle on which Dicey's concept is based upon is predominance of legal spirits. So it says that the legal spirits, like the judiciary, it is going to play an utmost role in determination of rights, liabilities, and freedom. It says that rights and freedom are in discretion to judicial decision. डाइसी ने गवर्नमेंट से ज्यादा एम्फोसिस जो दिया है वो जुडिशरी को दिया है. उन्होंने कहा है कि जो लीगल स्पिरिट्स हैं, व्हाट आर द लीगल स्पिरिट्स? लीगल स्पिरिट्स आर जुडिशरी ऑफ अ country, the supreme court, the high court. So the dicey has said that the role of the courts is assigned as the guarantors, as they are the guarantors of liberty, rights, freedoms, and obligations of the countrymen. The legal spirits are going to enforce the law in their country. It is their duty to determine the rights and liabilities of all the people in the country, and it is their duty to protect the civilization, the people belonging to the country, and their rights and their freedoms. So, this was the concept of Dicey, which has been divided in three elements, that is, equality before law, predominance of legal spirits, and the first one was supremacy of law. So whenever you are going to start write an answer on rule of law, you are going to elaborate one page at least upon these three principles which were given by Dicey. And then you will mention that every theory has a criticism. Every theory has a criticism, be it a scientific theory, be it a legal theory, be it any sort of theory. हर पर्सन की अप्रोच इतनी बेस्ट नहीं हो सकती कि वो सारे एलिमेंट्स को कवर करे. कहीं ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स हर थ्योरी में रहती हैं. तो डाइसी की थ्योरी में भी शॉर्ट कमिंग्स थी. ठीक है. इस ही इग्नोर्ड द प्रिविलेज ऑफ क्राउन. अब ही ट्रीटेड एवरी पर्सन सेम, कि हर पर्सन सेम है. तो डाइसी अपनी थ्योरी में किंग की बात करना,
किंग की प्रिविलेजेस को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। द गवर्नमेंट को जो प्रिविलेजेस हैं, जो एमपी एमएलए को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिविलेजेस दी हैं, अगर हम उन पे डाइसी का कॉन्सेप्ट लगाएं तो उस हिसाब से डाइसी तो फिट ही नहीं बैठ रहे इंडियन थ्योरी में। सो दिस वाज अ शॉर्ट कमिंग ऑफ डाइसीज कॉन्सेप्ट। हेलो अर्पण, गुड इवनिंग। Then the second one is Dicey has not talked about international tribunals, right? Dicey did not talked about international law in his concept. He did not talk anything about international law because he just talked about nation, that a nation, एक nation में rule of law जो है वो apply होगा. But what about international affairs? हमारे पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज के आपस में भी तो रिलेशंस हैं, तो उन पे डाइसीज ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, डाइसी का कॉन्सेप्ट उस टॉपिक पे साइलेंट है। डाइसी ने पूरी तरह से इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट किया है। ही हैज प्रिजर्व द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इन हिज थ्योरी, बट देन he has totally ignored the fact that sometimes that discretion is also should also be given to the government. डाइसी का जो थ्योरी है वो बिल्कुल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर को, गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को इग्नोर करता है, बिकॉज इट क्लियरली शोज दैट while framing the concept of rule of law, Dicey was afraid, he was afraid of the abuse. So जब हम डिस्क्रेशनरी पावर सॉवरन को देते हैं वो टोटली अगेंस्ट ह्यूमंस नहीं होती। अगर हम उन्हें डिस्क्रेशनरी पावर ही नहीं देंगे तो सही गलत कुछ रह ही नहीं जाएगा। अगर कल को मैं एक कम्युनिटी से हूँ और मैं एक रूल लगवा देती हूँ कि हम इस कम्युनिटी के लोग हमेशा पिंक कलर के कपड़े पहनेंगे, तो अब डाइसी की थ्योरी के हिसाब से तो मेरी बात को मानना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पावर ही नहीं बची। So this was also a shortcoming of Dicey's concept, right? So these were few shortcomings of Dicey's concept. Are we clear till here of what Dicey wanted to say and what are the shortcomings of his model of rule of law? Should we proceed further? ऑल्सो डाइसी ने नेचुरल जस्टिस की कोई बात नहीं की है अपने कॉन्सेप्ट में। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होते हैं दे आर एक्सरसाइज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस? जब तुम आगे एलएलबी पढ़ोगे तो यू आर गोइंग टू रीड एवरीवेयर पीएनजे। पीएनजे इज द शॉर्ट फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट वी कैन नॉट गो अगेंस्ट दोज टर्म्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस afraid of tyrannical abuse, Asmita. मतलब कि he was not afraid, but he said that there is a fear in people that their king is tyrannical, that their king is going to um, overburden them with their decision. So that is why there was this is the reason that Dicey framed such a concept where he has disliked the discretionary power given to any kind of governing authority. Okay, सो वी वर ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कहीं पे भी जब लीगल सिस्टम बनता है तो वहां पे वी इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या हैं? जस्ट इमेजिन इफ यू आर अ जज and there are two people standing in front of you, what is going to be the principle of natural justice? That you are going to hear both the parties. आप ए और बी दोनों की बात को सुनोगे, दोनों की बात पे गौर करोगे, दोनों की बात पे एम्फसाइज करोगे, एंड देन यू विल डिसाइड द मैटर। एंड सेकेंडली, अगर आपका कोई एक पार्टी जो है वो आपकी रिलेटिव है, तो आर यू गोइंग टू गिव द बायस डिसीजन? No, you are not going to do that as a judge. So this is a principle of natural justice, that the person who is adjudicating the matter, the person who is deciding the matter, he should hear both the parties. He should not be biased, and the decision, the hearing, it should be done in public. It should not be done in a closed room until and unless it requires to be done like that. तो सबके सामने होनी चाहिए, like what do we say, a transparency. There should be a transparency in all the judicial proceedings, एंड जजमेंट्स जो है वो प्रोनाउंस होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए कि ये जजमेंट इस मैटर पे इसके फेवर में आई है। सो दीज आर द फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब हमारी कंट्री में जब रूल ऑफ लॉ नहीं था
तब भी कहीं ना कहीं ये चीजें होती थी। जैसे तुमने मूवीज देखी होंगी, बड़े बड़े दरबार लगते थे राजाओं महाराजाओं के, एंड अगर कोई ऑफेंस कर देता था उनकी टेरिटरी में, उनकी प्रजा में, उनके एरिया में, तो उन्हें बुलाया जाता था। कोर्टमैन उनके उस पे विचार करते थे कि किसको किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। क्या उसे देश निकाला दे दें, या क्या उसे हम कारावास में डाल दें, या क्या करें। सो दिस हैज बीन अ थिंग सिंस सो लॉन्ग, सिंस अर्लियर टाइम्स इन इंडिया एज वेल, कि उनको हम एनालाइज किया जाता था, भरे दरबार में बुलाया जाता था, उनसे पूछा जाता था कि क्या आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो, एंड देन उन्हें पनिश किया जाता था इफ ही वॉज फाउंड गिल्टी, एंड इफ ही वॉज नॉट फाउंड गिल्टी ही वॉज एक्विटेड। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, nemo judex causa in sua, yes, yes, Abhishek, good. um, that there must be a cause of action while punishing someone, or the alterum partum, right? That no person should be left unheard, right? Right. That a judge cannot be biased, that there should be no biased interest, right? Good, Abhishek. These are the principles of natural justice. So these were also being followed in India and in a lot of countries. When law was not there, kings used to follow this thing. But then तब भी वहां पर वो ब्राह्मण क्षत्रिय एंड शूद्र वैश्य डिवीजन आता था. It used to affect people in different ways. So अब जब मुगल्स आए, मुगल्स ने भी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को अपनाया, उन्होंने भी लॉ को सुपीरियर माना, उन्होंने भी उसी तरह से कोर्ट्स जो हैं वो चलाए. ठीक है. अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी रूल्स बने. ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ अपना कोर्ट लेकर आई. 1774 में वी हैड अ सुप्रीम कोर्ट, विच वाज इन विच वाज वेयर इन इंडिया, हु इज गोइंग टू टेल मी? जो सबसे पहला 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था वो कहाँ था? Where it was, you must have read it during your preparation, so you are going to write it in the comment box anyway. So then 1774 में ब्रिटिशर्स अपना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो था, अपने साथ लेकर आए थे. एंड गेस कैलकटा, right? So Calcutta में we had our first Supreme Court, which was established in 1774, and then there was judiciary and executive were separated. We had a separation of power from the British rule, but when we got free, rule of law was incorporated then in our constitution. अब जब अगेन पहले से ये चीज रिकॉग्नाइज थी इंडियन कल्चर में, किंग्स कोर्ट्समैन यूज टू डिसाइड द मैटर लाइक दिस ओनली, बट उसको हम रूल ऑफ लॉ नहीं कहते थे. मुगल्स के टाइम पे भी लॉ की वैल्यू थी कि जो राजा ने बोल दिया वो ठीक है, और हम सुन के आपस नेचुरल जस्टिस एग्जिस्ट करता था, बट वो रूल ऑफ लॉ है वो कोई जानता नहीं था. देन उसके बाद हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने ब्रिटिश कॉन्सेप्ट्स को यहाँ इनकॉर्पोरेट किया, एंड देन हमने रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया एंड अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया. सो द मोस्ट आइकॉनिक जजमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी. इट वॉज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, right? And then it said that any law which is inconsistent with constitution is null and void. And there are a lot of judgments which support it. For example, Minerva Mills, for example, Bandhua Mukti Morcha case, ADM Jabalpur Shukla case, Indira Gandhi versus Raj Narayan, and a lot of other judgments, Indira Sanve's judgment, and a lot of more judgments. Not Indira Sanve, Manika Gandhi versus Union of India, I'm sorry, I got confused. Anyway, so then whenever now you are going to write about rule of law, what you are going to do is you are going to start with rule of law का historical relevance क्या है, कहाँ से rule of law आया, कौन उसके originator थे. डाइसी ने अपनी book The Idea of Constitution में इसकी बात की है. How do you see the sexual harassment which you are talking about? जो एक दो साल पहले का केस था सीजीआई का, आई कैन नॉट रिकॉल हिज नेम. देयर वाज अ केस जिसमें उन्होंने अपने ही केस में खुद डिसीजन दिया था और खुद ही वाज इंक्लूडेड इन द बेंच, राइट? आर यू टॉकिंग अबाउट दैट केस ना?
हाँ, तो yes, that was a violation. I will consider it as a violation of natural justice, because if that person is accused, then why is he hearing the case? Yeah, yes, yes, Justice Ranjan Gogoi. I think that was a violation of natural justice, but I am not certain with my answer right now, because I think it's not the right time to do so here. You can, of course, discuss it with me in on WhatsApp or something else. But I think a lot of people are seeing it, and making any comment here officially is going to create chaos. So, whenever we are going to talk about rule of law, we are going to start with how do we start, how do we got rule of law, the origin, the history. Then we go into Dicey's concept. Then we will write a small paragraph of why Dicey's concept has been criticized. And then we are going to shift the topic to rule of law in the Indian context. We are going to describe that India has been treating law as the king of kings. People law Rule of natural justice prevailed in our shastric books also. The Mughals also understood that law is a supreme authority, and with the origin of East India Company, we had our Supreme Court established in 1774 in Calcutta. And after independence, the Indian Constitution incorporated rule of law as the basic structure doctrine, as decided by the case of Keshwanand Bharati. And then you are going to write some judgments which supported a rule of law, like section 13, sorry, article 13 of the constitution, on which Minerva mills is based. Then you are going to talk about also, don't forget to incorporate some words from preamble, like freedom of thought, belief, worship, faith, equality of status and opportunity, economic, social, and political justice. You do write these points. Law of dharma, yes, it can be considered as rule of law, but however it was not considered in the expressed form. they जैसे मैंने बताया ना कि जैसे कोर्ट्स होते थे, देयर वर कोर्ट्स, राजा महाराजा जो थे, अगर मान लो किसी ने किसी के घर से सोना चुराया है और वो सोना चुराते हुए पकड़ा गया, तो उसे भरी सभा में बुलाया जाता था, उससे पूछा जाता था कि तुमने क्यों चुराया है, व्हाट वाज द रीजन, वो अपना आंसर देता था। और जो वो बोलता था, फिर उसके बेस पे जो राजा था वो अपनी प्रजाओं को, कोर्ट्समैन को, मंत्रियों को बोलता था कि बताओ क्या करना चाहिए। देन वहां पे देयर वाज अ डिसीजन कि हम इसको 6 दिन कारावास में डाल देते हैं, या हम ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। तो देयर वाज एन इम्प्लाइड मैनर में रूल ऑफ लॉ था, बट वी हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड इट इन अ इन अ राइट मैनर, लाइक कि वही, हाँ वही रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। वी वर प्रैक्टिसिंग इट, बट वी डिड नॉट नो दैट दिस इज रूल ऑफ लॉ। कैन यू टेल अस द डिफरेंस बिटवीन? ओके, रूल ऑफ लॉ इज एनीथिंग जो कि लॉ की कंसिस्टेंसी में है, मतलब जैसे लॉ सुप्रीम है, ठीक है, दिस इज रूल ऑफ लॉ, कि लॉ के आगे सब इक्वल है। आर्टिकल 14 क्या है? रूल ऑफ लॉ है कि देयर इज एन इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ सबको बराबर मानता है, लॉ इज द सुप्रीम पावर। रूल ऑफ लॉ का सबसे छोट सीधा सा मतलब है कि दिस लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन अ कंट्री। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? जो हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश करते हैं, किसी चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, जो हम लॉ बना रहे हैं, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। It like there are two different things. Rule of law is a broader term, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि law is supreme एंड नेशन को गवर्नमेंट से ज्यादा लॉ रूल करता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है कि जो लॉ ने प्रोसीजर बनाए हैं, मतलब जो लेजिस्लेशन ड्राफ्टिंग करते हैं, आईपीसी बनाया है, आईपीसी है, वो क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। अलॉट ऑफ थिंग्स जो हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में भी एक बात की गई है, वहां पे भी ये वर्ड यूज है। आई जस्ट टेल यू, वेट अ मिनट। राइट, सो आर्टिकल 21 बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब अगर यहाँ पे ये वर्ड ना हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो जो पर्सन 3 लोगों का मर्डर करके आया है, वो तो कहेगा आर्टिकल 21 में मेरे को छोड़ दो।
इसीलिए हमने यहाँ पे डाला कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में जो कल्प्रिट है उसे तो आप सजा दोगे ना, उसे तो आप क्यों राइट टू लाइफ और लिबर्टी का राइट दोगे? सो प्रोसीजर इज द सेट ऑफ नॉर्म्स that the legislation has decided for us, and rule of law simply means that we all are under one authority, which is law. Abhishek, are you clear? And Arpan, are you also clear? अब आते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को कैसे सपोर्ट करता है। हमने केस लॉज पे बात की। केस लॉज अब हमेशा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आंसर लिखना। बीच में अब तुम ये लिखोगे कि हाउ हाउ अब हमने रूल ऑफ लॉ ले लिया, वी हैव अडॉप्टेड रूल ऑफ लॉ, बट हाउ वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यू आर गोइंग टू मेंशन थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट, लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी की बात करोगे आप, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, आप डिग्निटी, इंडिविजुअलिज्म की बात करोगे। नो, पार्शियल एप्लीकेशन नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी तो रूल ऑफ लॉ के अंडर ही आता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मीनिंग यही तो है कि लॉ सबको बराबरी से प्रोटेक्ट करता है। So how do we say that there is a partial application? There is no partial application. We all abide by the law. So when you are going to write the constitutional provision, you are going to mention preamble. You are going to mention fundamental rights that we have been guaranteed by our constitution. A lot of fundamental rights, and then you are going to talk about DPSP also. That state को भी constitution ने कहा है कि to make laws for utmost welfare of people, because we are a welfare state. And then we are going to talk about, also we are going to talk about fundamental duties too, that even though citizens को rights दिए गए हैं पर उनकी भी कुछ कर्तव्य हैं अपने nation के towards. So in this way we have incorporated the rule of law, that government की अगर लोगों के towards कुछ duty है तो लोगों की भी देश के towards duty है, and people are also required to abide by the law. They are also required to respect their national anthem, their national flag, their freedom fighters, because of whom we got the freedom. People are required to preserve their national monuments. People are required to respect women. People are required to do whatever that has been mentioned in fundamental duties. We have also incorporated in the constitution right to education, right? So these are the principles which are signifying that how strong rule of law is in Indian context, how strongly our laws has been designed to imply rule of law in the Indian legal system model. So this is how you are going to frame your answer, right? So to sum it up quickly, whenever there would be a question on rule of law, you are going to start with the origination of rule of law, then you will move on to Dicey's concept, and then you will move on to rule of law in Indian context, like how the kings used to do in their courtships. And then you are going to talk about the establishment of Supreme Court in 1774 by East India Company. Then you are going to talk about rule of law, that how it has been recognized as a basic structure doctrine in the case of Keshwanand Bharati. Then you are going to talk about the provisions in preamble and in other parts of the constitution that sticks to the motive of rule of law. And then you are going to quote 3 or 4 case laws, like Minerva Mills case, like Manika Gandhi versus Union of India case, like Indira Gandhi versus Raj Narayan, like Bandhua Mukti Morcha, like ADM Jabalpur Shukla versus um, ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla, and also Ray Anuradhati Roy. So you are going to quote 3 or 4 cases out of these cases, and the answer is done. And you will conclude that yes, we can therefore say that rule of law has a literal application in India due to Article 14. Article 14, 1921 को भी आप mention करोगे तो it is going to be an effective answer. So, are we clear? Also, mention Article 13. That Article 13 states that any law which is in derogation with Part 3 of the Indian Constitution is therefore null and void to the extent of inconsistency, which says that no laws could be made in opposition to the fundamental rights of any person of the country. Is that clear? Are we clear on rule of law?
because I think there is nothing more left in rule of law now. We have done rule of law as well as we have done a rule of law in Indian context. This, if you have written these points, then rule of law is going to be a topic of 5 to 6 pages in your answer. And then when we move to separation of powers, what does separation of power means? Could anyone put it in the comment box? Asmita, Abhishek, Arpan, Ashwani, please put it in the comment box. What do you understand by separation of powers? Okay, there is a question. Write a question first on rule of law. Rule of law, quotes में लिखना, horizontal division of power. Yes, Abhishek. Okay, write the question in quotes. Is rule of law a myth in India? Yes, Arpan. Okay, so the question is rule of law a myth in India? Question mark. Comment. अब आपको इस पे कमेंट करना है whether it is a myth in India or not. You can always write an answer which is negative to the question. अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि is rule of law a myth in India, you do not have to answer in a positive way, in an affirmative way. You can always say that no, it is not a myth. We have actually exercised rule of law, and we are exercising rule of law since longer times in our country, right? So this sometimes the examiner is going to confuse people this way also, because जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, we are expected to affirm what has been asked in the question. So it is not always necessary. You can always go against what has been asked. Hmm. Right. Separation of powers. Okay. So सेपरेशन ऑफ पावर पे जब भी क्वेश्चन आएगा ना, वो एक सोलो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर अपने आप में एक छोटा टॉपिक है. तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को जितना हो सके, यू आर गोइंग टू मेक अ चार्ट. एंड हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर्स को तुम्हें इलेबोरेट करना है. हाउ आर यू गोइंग टू इलेबोरेट दैट सेपरेशन ऑफ पावर इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, is one of the features incorporated in basic structure doctrine of the Indian Constitution. And then you are going to write that हमने separation of power का concept कहाँ से लिया है. We have from where we have taken the concept of separation of powers. कहाँ से लिया है, किसी को पता है? कोई आंसर बताएगा इस चीज का? American Constitution, right? Right. Okay. So separation of power means that you are designating the three organs of, yes, USA, right? That you are designating three organs of a government, that is legislation, judiciary, and executive, for their desired purposes. We are distinguishing the authorities. We are bifurcating the work, that executive is going to do this part of work, judiciary is going to do this part of work, and legislature is going to do this part of work. So when we are going to talk about the separation of power in Indian context, we will always refer to the separation of power in USA as well as Britain, because USA से हमने separation of power का concept लिया है. तो we are going to take some points from there as well. हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम पहले इंडिया का शो करेंगे, एंड देन हम यूएसए, और देन हम ब्रिटेन का शो करेंगे. ठीक है. यूएसए में क्या है, जिसको हम इंडिया में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी कहते हैं, यूएसए को हम वहां पे कहते हैं, यूएसए में हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, कांग्रेस एंड जुडिशरी. ठीक है.
अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस वहां का लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेचर है, ठीक है, और वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाउस ऑफ सीनेट्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड दोनों ही हाउस के मेंबर्स जो हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ लोअर हाउस के लोग यानी कि लोकसभा के लोग जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जो वहां का प्रेसिडेंट है वो खुद सीनेट का पार्ट नहीं है, बट ही अपॉइंट सीनेट, एंड द मिनिस्टर्स जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट एंड नॉट द सीनेट, नॉट द पार्लियामेंट, ठीक है। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी वहां पे इंडिपेंडेंट है, और वहां पे सबसे पावरफुल ही जुडिशरी है यूएसए में। इट कैन इवन डिक्लेयर द लॉ विच इज मेड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस जो है वहां की पार्लियामेंट का नाम है, कांग्रेस और प्रेसिडेंट के जो एक्ट्स बनाए गए हैं उनको भी वो वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सो दिस इज अबाउट यूएसए जुडिशरी। जो यूएसए के जुडिशरी में ओवरलैपिंग है, वहां पे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, और वहां पे जो लेजिस्लेशन के डिसीजन है उस पे प्रेसिडेंट अपना डिसीजन ओवरराइड कर सकता है, बिकॉज ही हैज वीटो पावर, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करता है। सो देयरफॉर देयर इज एन ओवरलैपिंग, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो ओवरराइड कर रहा है जो लॉ कांग्रेस बना रही है, और एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपॉइंट कर रहा है। सो देयर इज नॉट प्रॉपर डिवीजन, नो नॉट प्रॉपर सेपरेशन, बट सम ओवरलैपिंग पावर्स। एंड अब जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन को भी राइट है कि वो कोर्ट्स के मैटर में इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। एंड ऑल्सो जुडिशरी जो है वो भी अपने अपनी पावर्स में अपने जो उसकी जुडिशियल पावर्स हैं उससे वो जो लॉ हैं उनको वॉइड डिक्लेयर कर सकती हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव टू ब्रिटेन, ब्रिटेन में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि वहां पे हेड कौन है, हु इज द हेड इन ब्रिटेन, क्वीन, क्वीन हैज बीन अ हेड, राइट, एंड पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाता है, और उनके लॉज सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है। वहां पे जुडिशरी जो है, जुडिशरी कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, एंड द थर्ड पार्ट इज नॉट जुडिशरी बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रियल पावर में है, वो लॉ बनाते हैं, उस लॉ को पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी उससे बाइंड होता है। एंड क्वीन जो है, क्वीन वर्क करती है, इट्स अ मोनार्की, यस, क्वीन वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो अल्टीमेटली यूएसए सॉरी यूके में, ब्रिटेन में जो पावर है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। अब when we are done talking about USA and Britain, we will come to India. अब इंडिया में भी अगर हम बात करें सेपरेशन की, तो सबसे पहले हम सेपरेशन के लिए आर्टिकल पे आते हैं। दिस इज आर्टिकल 53, जहां पे लिखा है दैट प्रेसिडेंट इज सॉरी आर्टिकल 52, दैट प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन, and then on article 53 we comes that all the executive power of the country vests with the president. जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट कौन है इंडिया में, ही इज अ नॉमिनल हेड, राइट, ही इज एन एग्जीक्यूटिव हेड, बट प्रेसिडेंट इज बाइंड बाय द डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो बिल बनाएगा, प्रेसिडेंट उसे सिर्फ एक बार मना कर सकता है, दूसरी बार उसे असेंट देना पड़ेगा। दैट इज वाई द प्रेसिडेंट और द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया is known as the executive or nominal head of the country, ठीक है। अब जो आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 का जो आर्टिकल 74 में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू वर्क एज पर एड एंड एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है, ही हैज टू अबाइड बाय व्हाट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैड डिसाइडेड। आर्टिकल 75 का जब हम क्लॉज 4 पढ़ते हैं, वहां पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट टू द लोकसभा। पार्लियामेंट जो सॉरी नॉट पार्लियामेंट, 15% of the ministers, they constitute the council of ministers, and that council of ministers is collectively responsible to Lok Sabha. They are the club, they are a cluster of people who are going to decide the law for the country, and president has to abide by them. When we move on to legislature, आर्टिकल 79 प्रोवाइड्स दैट अवर प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर्स हैं। लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना,
सबसे पहले हम जब तीनों में डिस्टिंग्विश करेंगे, हम ये इस एलिमेंट को नोटिस करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ इम्प्लीमेंट करता है, जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है, और जो जुडिशरी है वो लॉ को प्रोटेक्ट करता है। और जब कभी कोई इनकंसिस्टेंसी हो, किसी लॉ का मतलब ना समझ आ रहा हो, तो लॉ उसे इंटरप्रेट भी जुडिशरी ही उस लॉ को इंटरप्रेट करता है। बट हमारी कंट्री में भी ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स है। वाई? क्योंकि प्रेसिडेंट को कौन गवर्न कर रहा है अल्टीमेटली? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट को एक बार प्रेसिडेंट कोई बिल पास करने से मना कर सकते हैं, बट सेकेंड टाइम व्हेन द बिल हैज बीन फॉरवर्डेड टू हिम बाय द लोक सभा एंड बाय द parliament, he has to approve that, right? And when we come up to legislature, legislature का काम है लॉ बनाना, बट जब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 123, तो उसमें तो प्रेसिडेंट इज आल्सो मेकिंग लॉ, देयरफॉर देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ पावर्स। एंड व्हेन वी कम टू जुडिशरी, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए, जुडिशरी के लिए, वी आर गोइंग टू कीप इन माइंड आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 बोलता है दैट एग्जीक्यूटिव इज सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी, बट वी ऑल नो दैट आर्टिकल 50 is a DPSP, which is something which is not totally enforceable in the court of law. So therefore separation of power is a directive principle and not really a mandate, because president जो है वो भी तो पार्डनिंग पावर्स का एक्सरसाइज करते हैं अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अ प्रेसिडेंट कैन हियर द प्ली ऑफ पार्डन बाय द डेथ कॉन्विक्ट्स। तो इन दैट केस प्रेसिडेंट इज प्लेइंग द रोल ऑफ जुडिशरी। एंड कभी कभी क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा पढ़ते टाइम पे, किसी किसी टाइम पे कोर्ट गाइडलाइंस बनाता है। वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एग्जांपल ऑफ दिस सिचुएशन इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। हमारे पास पहले कभी भी वी डिड नॉट हैव पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट हमारी कंट्री में नहीं था। तो उस टाइम बीइंग के लिए स्टेट ऑफ विशाखा, राजस्थान वर्सेस विशाखा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए गाइडलाइंस बनाई। सो इन दैट वे जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसने लेजिस्लेचर का काम किया। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लेकिन वो इतना परफेक्टली फिटिंग नहीं है। यस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राइट। उस केस में देयर वाज अ विक्टिम भवरी देवी। शी वाज हरास्ड बाय हर एम्प्लॉयर्स, लाइक वो एक नॉर्मल मजदूर थी, एंड हर हस्बैंड वाज फ्राइटन्ड एंड शी वाज हरास्ड बाय हर एम्प्लॉयर्स। वो मजदूरी कर रही थी, और जो वो बिल्डिंग के वो लोग थे, मालिक वगैरह थे, उन्होंने उनको सेक्सुअली हरास्ट किया था। So Vishakha was an NGO and which filed a complaint against that act. And in that case, the guidelines for prevention of sexual harassment at workplace was framed by the Supreme Court, which later on got converted to the Posh Act in 2013, when there was the case of Nirbhaya gang rape. उसके बाद हमारे पास stricter laws आ गए against women harassment. So for all those period of for the that long period of 8 years, those guidelines which was framed by judiciary, they serve the purpose of a statute. So we cannot say that we have totally distinguished the powers, but they are interlinked. One plays the role of another when required, but इस चीज का यूज आर्बिट्रेरीनेस में कभी भी नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव अपनी मन मर्जी से कोई भी रूल बना रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरे पास पावर्स हैं, बिकॉज doctrine of separation of power is not completely applicable. It is applicable to the extent to avoid arbitrariness and tyranny of the government. Are we clear till here? Are we clear till here? Or we do not need to go further into separation of powers for the exam purpose. It is fine till here. कोई डाउट, कोई इशू किसी को? Arpan, you have a doubt?
NJAC Act struck down by Supreme Court. Yes, it was struck down because it was violating the basic structure doctrine. अब देखो, जुडिशरी का कोई रोल नहीं है, जुडिशरी का कोई भी रोल नहीं है प्रेसिडेंट को डिसाइड करने में या एमपी एमएलए को डिसाइड करने में. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिसाइड करने में हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? वो तो वायलेशन हुआ ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का. So that is why that NJAC was struck down in 2015. That is another long journey of four judges case. Three judges case आए, जिसमें से second judges case ने collegium को coin out किया. थर्ड जजेस केस में कलीजियम कैसे काम करेगा वो हमने देखा. एंड देन 2014 में एनजैक को ले आया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाया गया, which was in 2014 by 99th amendment of the Indian Constitution. So it gave a procedure. एक कमेटी बनाई गई जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, सीजेआई होंगे, दो एमिनेंट पर्सनालिटीज होंगी, एंड देन दे आर गोइंग टू डिसाइड द जजेस. So this was challenged in the fourth judge's case, which was Skaura versus Union of India. Skaura stands for Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India. So in that case, the Skaura took a plea that isn't it violation of doctrine of separation of powers that all the whole of the executive and sorry, not executive, whole of the cabinet of ministers is going to be involved in deciding the judges? Why judges are not given the power to decide the judges? Because judiciary is a separate powerful organ in this three tier system. So, Supreme Court therefore upheld the collegium again. It struck down NJAC and therefore it declared 99th constitutional amendment to be unconstitutional. Right, Abhishek? Because it was interfering with the doctrine of separation of power, so it was struck down. Abhishek, are you clear? Arpan, any doubts? Asmita, Ashwani, any doubts? So, right, we have already wrote a question that is rule of law a myth in India? Comment. उसके आगे ही एक और क्वेश्चन लिख दो. Also elaborate the application of doctrine of separation of power in Indian concept. No, Abhishek, collegium is not opaque. It is a myth that collegium is opaque because collegium तब पिक्चर में आता है जब दो कैंडिडेट्स का मेरिट इक्वल हो जाता है. However, it could be my opinion, but मेरे हिसाब से collegium opaque नहीं है. एनजैक में देयर वाज एन इंटरफेरेंस. एनजैक में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन भी इन्वॉल्व हो रहे थे यहाँ पर. बट यहाँ पर क्या है, कलीजियम में अ जज इज बेटर, a judge is in a better position to determine that who will be a judge, not a person who is an MP or MLA. Because MP के अगर आप grounds देखोगे, qualification grounds देखोगे, so there are no educational requirements for MPs, right? They have just provided the age and the person to be a citizen with no criminal records. How a person is going to be a judge, वो एक legal person ही determine कर सकता है. तो इसीलिए एनजैक वाज नॉट अ राइट थिंग टू डू मेरे हिसाब से. दिस इज माई वेरी पर्सनल ओपिनियन. बट collegium, there are often people complaining about collegium that collegium is not transparent, and that there is what do we call, जो आजकल उसमें भी काफी चल रहा है बॉलीवुड में, देयर इज अ वर्ड, आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, that there is a
person favors his own person in judiciary, but I don't think so that is the case. Nepotism is the word, but I don't really find it to be applicable. Why? Because collegium कब existence में आता है, जब दो कैंडिडेट्स जो लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज में जज बनना चाह रहे हैं, जो उसकी कैंडिडेचर में आ रहे हैं, उनका मेरिट इक्वल हो जाए। वी हैव टू क्वालिफाई मेरिट्स। एक जेएमएफसी के मेरिट्स बनते हैं तभी वो प्रमोट होके सीनियर डिवीजन में जाते हैं। सीनियर डिवीजन पे यू हैव टू डू अ सर्टेन नंबर ऑफ केसेस and then you will be promoted to district level, then and also at district level you have to do a certain number of cases, you have to pass some internal examinations and then you will be promoted to higher divisions. So अगर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, the first step is not to go directly to collegium, but the first step is to clear your merit। आपको अपना मेरिट अच्छा करना है। अब अगर दो कैंडिडेट्स हैं जो इक्वल मेरिट पे आ रहे हैं, 4 सीट्स हैं मान लो, और 8 लोग हैं जो कि इक्वल मेरिट पे आ रहे हैं, ठीक है? तो अब उनमें आप 4 लोगों को कैसे चूज करोगे, उसके लिए कोलिजियम बैठता है। सो देयर इज नो ओपेसिटी देयर। collegium is also transparent because everything is decided on merits। collegium तब existence में आता है जब दो लोगों का merit same हो जाता है। so how now will you call it opaque? हाँ, कभी कभी आई अंडरस्टैंड दैट हो जाता है, फेवरेटिज्म आ जाता है, बट जनरली इट्स नॉट ओपेक। मेरे हिसाब से इट्स नॉट ओपेक बिकॉज आई पर्सनली फील दैट एनजैक इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन टू दिस। Okay, Abhishek, did you get it, or you have any more doubts in it? Abhishek, are you clear? Do we have any more doubts, or should I sum up? So today we have discussed two most important topics for this course for jurisprudence, and I am expecting that this would be a probable question this year. There is one recent case in which one of the High Court judge which has been transferred because he has given. Abhishek, I have no idea about this. I'll have to see because I think I'm not aware of this case. It would be very kind if you can tell this to me, and then I'll let you know, huh? मुझे एक बार देखना पड़ेगा ये इसका बैकग्राउंड क्या है इस केस का। All right. Arpan, Asmita, do we have any more doubts? He was eligible for empanelment for. I think I have heard about it, but um, is there any evidence that his transfer was made because of his judgment against the Home Minister? Okay, Ashwini. Okay, Arpan. Like, is there any direct evidence of why it happened? Like, unka transfer isliye hua because he gave the statement against Honorable Home Minister? Because I don't think so there is going to be any conclusive evidence for it. And since we do not have any evidence, we cannot comment on it.
No, not you. Like, is there any case going on it, or is there any proper thing that? Yes, important question is this only. Rule of law and separation of power. That is rule of law a myth in India? Comment. And how would you define the applicability of doctrine of separation of powers in Indian context? Abhishek, do let me know the content of whatever you are telling here in the comment box. I would like to read on it because I'm not aware of what you are asking, the merits of that particular thing, right? So, okay, some news story. ठीक है, मैं सर्च करके I'll let you know. ठीक है, because I don't know, I'm not well aware of this thing right now. So Ashwini, Arpan, Asmita, any questions? And Manu and whoever, all the people who have joined. Should we end up today's session, or are there any more doubts? Thank you, Ashwini. Thank you, Abhishek. So I'll put an end to this streaming. Okay. Tomorrow we will discuss the hierarchy of courts in India. Try to read Article 124 to 147 from Constitution. Okay, because they are going to be an important element in deciding the hierarchy of courts, in discussing the hierarchy of courts, and we will start with Lok Adalats also. Thank you, Abhishek. Thank you, Arpan. So I'll wind up today's session. Good night. Bye, everyone. Repeat what, Arpan? Okay, 124 to 147 article in from Constitution, because we are going to discuss the powers of Supreme Court while we will study the hierarchy of courts, right? Although we have to study about high courts as well, but high courts and Supreme Courts are analogous to each other. So only if you are coming after reading the high court, sorry, the Supreme Court, that would be enough. Tomorrow we will do hierarchy of courts, and if the time favors, we will start with either Lok Adalat or legal services, legal aid services, right? So I think I'll call it a day. Good night, everyone.